Hi everyone, welcome to Edutap and welcome to this video. In this video, we are going to discuss another important topic under ARD Simplified Series, that is cropping pattern. Okay? I hope your preparation is going well and you are following these lectures continuously. So students, why I have chosen this topic? Again, it's a very important topic for your exam point of view. Why I'm saying so? There are multiple questions that have been seen from this particular topic. So let me give you few examples. तो सबसे पहले हम previous year questions देखेंगे. We'll not try to solve them at once, right? We'll just see what kind of questions were there from this particular topic. Then we'll discuss about cropping pattern, types of cropping pattern, and at the end again we'll revisit the question and we'll try to solve them, right? So that will be the flow of this lecture. So first let us see the questions that were there from this topic. So in your NABARD Grade A Phase 2 2020 examination, there was a question: what is the cropping pattern of sugarcane with a short span crop such as potato or onion called that can be harvested even before sugarcane reach maturity? So this was the question. Right now, if you can answer this question, well and good. Otherwise, we'll come back to the question and try to solve it afterwards, right? Next question is again from NABARD Grade A Phase 1 2021 examination. Question is growing of two or more crops simultaneously on same field is known as. Now next question, if I talk about, that was asked in your NABARD Grade A Phase 1 2023 examination. It says, which of the following involves raising morphologically and physiologically different crops that complement each other and succeeding crop have immense potential? Clear? So we'll come back to this also. Next question is, in which of the following cropping pattern 4 crops can be grown but 1 crop is cultivated before the harvest of previous crop? Again, question asked in NABARD Grade A Phase 1 2023 examination. One more question from 2024 examination. With sufficient irrigation facilities present, which of the following kind of cropping system can be followed? Okay, this was the question asked in your 2024 examination. Now you can see repeatedly every year, almost every year, there is a question from this particular topic. So ये topic बहुत important हो जाता है आपके exam point of view से. So what we are going to discuss in this particular lecture is basically what is cropping pattern and different type of cropping pattern so that we can solve all these questions, right? Now let's move ahead and understand what is this cropping pattern. So basically student, cropping pattern is the proportion of area, okay, which is occupied by various crop at a particular period of time. किसी एक particular time में कितना area occupied है under any crop, that is called cropping pattern, right? So क्या है cropping pattern से, from the name itself it is suggesting the pattern which we are following for cropping, that is cropping pattern. Now let me give you example. Like for say I have a piece of land, ठीक है? Now and in Kharif season I decide to utilize my entire land for only one crop, that is rice. Okay, so I decide that I am not going to grow any other crop. I am only taking one crop, that is rice. Now this is a pattern which I have followed. I am not going for any other crop, only one crop. My other decision can be like I wanted to grow 2 crops. Like for say I wanted to use half of my land for rice cultivation, half of my land for maize cultivation. Now again I have followed another pattern where I have chosen 2 crops. So what will happen? In that particular Kharif season, some part of this land will be occupied by rice crop, some part will be occupied by maize crop. I can go for multiple, again, I can use this crop, this land for rice, maize, and I can go for groundnut also, right? So you can see I can use this land in multiple ways. I can take either one crop, I can take or 2 crops, or I can take more than 2 crops, right? So it's totally on me what kind of pattern I am following. So when we see such thing, that is called cropping pattern, means the pattern in which we are growing the crop, that is cropping pattern. Clear? So what is cropping pattern? It is basically the proportion of area under various crop at a point of time. Clear? Now students, your cropping pattern can be of different type, right? There can be monocropping or monoculture. There can be multiple cropping.
Now here I have given you the example where I am utilizing my entire land for only rice, then that will be called as monocropping because I am using only one crop, I am growing only one crop. But when I decide no, I should go for other crops as well, so along with rice I use maize, along with rice I grow maize and groundnut, then that will be called as multiple cropping pattern, where I have selected, where I have chosen multiple crops. ठीक है? So based on the number of crops we are selecting or we are taking or we are growing, that will be on that basis, we have two types of cropping pattern, monocropping and multiple cropping. Now let's understand these types in detail. Okay, so what is monocropping? So students, monocropping is growing one crop in any particular season. ठीक है? Like I have given you the example where in Kharif season I have utilized the entire land to grow rice. So what I am doing here? I am doing monocropping. Clear? Now, there is a lot of confusion about monocropping, monoculture and sole cropping. Let me tell you the difference. So students, monocropping is what? It is land occupied by one crop during one season. किसी एक season में when our entire land is occupied by one crop, that is monocropping. Now, how this monocropping is possible? So for say in Kharif season, I have taken rice. I haven't taken any crop in Rabi season, right? So again, for that particular year only, I have taken only one crop. And for one season, I have taken rice, right? Other form of this, when I repeatedly do this thing, or what can I do? I can take rice in Rabi season. Rabi season में भी मैंने rice को ही grow किया. It is possible in some areas where irrigation facilities are there, right? Where climatic condition is suitable for rice. So Rabi rice is also taken. So what I am doing? I am only growing rice in your Kharif season also, in your Rabi season also. So in one particular season, I have grown rice, monocropping. In Rabi season, I have grown rice, monocropping. Other form can be that in one season, I am taking rice, and in Rabi season, I am not taking any other crop, right? And students, if I follow or if I repeat this pattern year after year, like for the next year also, I am taking rice and rice or rice and nothing, right? So if I'm repeating this pattern year after year, then that will be called as monoculture. That will be called as monoculture. Monoculture क्या है? When same crop is grown year after year on a same piece of land, that is monoculture. Clear? So monocropping, monoculture, I hope it's clear to you. Now students, why this monocropping is done? So students, sometimes what can happen that farmer can have some limited facilities or farmer can have limited implements कि वो एक ही क्रॉप को ग्रो कर सकता है या एक ही क्रॉप के लिए उसके पास इनफ रिसोर्सेज हैं, तो इसलिए मोनोक्रॉपिंग होती है. बट देयर आर वेरियस साइड इफेक्ट्स ऑफ मोनोक्रॉपिंग बिकॉज वी हैव लर्न दिस दैट व्हेन वी टेक ओनली वन क्रॉप, ठीक है, एक ही क्रॉप को अगर हम रिपीटेडली ग्रो करेंगे एक पीस ऑफ लैंड में, व्हाट विल हैपन? सेम काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट विल बी डिप्लीटेड फ्रॉम द लैंड एंड इट कैन कम टू अ पॉइंट दैट जहाँ पे उसकी फर्टिलिटी बिल्कुल जीरो हो जाए, सॉइल फर्टिलिटी इज लोअर्ड, एंड उससे क्या होगा? हमारा जो पोटेंशियल है सॉइल का दैट विल डिग्रेड एंड हमारी जो फर्दर क्रॉप है दैट विल बी ऑफ नॉट गुड क्वालिटी और हमें उतनी यील्ड नहीं मिलेगी. क्लियर? आई होप इट इज क्लियर नाउ व्हाट इज मोनोक्रॉपिंग एंड मोनोकल्चर. नाउ स्टूडेंट्स, देयर इज वन मोर टर्म विच इज नोन एज सोल क्रॉपिंग. ठीक है, sole cropping is again like a monocropping, but sole cropping मतलब क्या होता है कि when any piece of land is under some variety, any particular variety, when a piece of land is under one kind of variety, that is called as sole cropping. ठीक है, आपने राइस खरीफ में आपने राइस ग्रो किया इस पे, बट राइस की अगर आपने 3 वेराइटीज ली है, that is monocropping. But if you have taken only one variety of rice to grow to utilize or to grow under this particular field, so that will be called as sole cropping. Sole cropping मतलब एक ही टाइप की आपने वैरायटी ली है for that particular piece of land. ठीक है,
I hope now it's clear. I hope now it's clear what is monocropping and monoculture. ठीक है. Now let's move ahead and let's discuss about the another type of cropping pattern, which is multiple cropping. Now what is multiple cropping? Here we are growing 2 or more crops on a same field in a year. ठीक है. किसी एक particular year में हम किसी एक पर्टिकुलर सीजन या ईयर में वी आर ग्रोइंग मोर देन टू और मोर देन 2 क्रॉप्स. ठीक है. नाउ स्टूडेंट्स, मल्टीपल क्रॉपिंग इज ऑफ अगेन डिफरेंट टाइप्स. इट कैन बी सीक्वेंशियल क्रॉपिंग, इट कैन बी अ इंटर क्रॉपिंग. ठीक है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीक्वेंशियल एंड इंटर क्रॉपिंग? लेट अस डिस्कस. सो इफ आई टॉक अबाउट फर्स्ट सीक्वेंशियल क्रॉपिंग, राइट? सो व्हाट इज सीक्वेंशियल क्रॉपिंग? इट इज बेसिकली it refer to growing of 2 or more crop in sequence on same piece of land. Like what kind of sequence? Example देते हैं, rice and wheat. ठीक है. आपने एक एग्रीकल्चर ईयर में आपने एक पर्टिकुलर एग्रीकल्चर ईयर में आपने पहले राइस ग्रो किया, फिर यू ग्रो wheat and you are following this sequence, right? This is a sequence. This is called a sequential cropping. हमने 2 क्रॉप ग्रो की है, राइट? एंड एक पर्टिकुलर ईयर में ग्रो की है, एक सीक्वेंस में ग्रो की है. दैट विल बी योर सीक्वेंशियल क्रॉपिंग. वी कैन ऑल्सो टेक राइस और पल्सेस, यू नो, इन केस ऑफ क्रॉप रोटेशन, जहाँ पे हमें सॉइल फर्टिलिटी को भी ध्यान रखना है. सो वी कैन टेक राइस, पल्सेस एंड wheat. So again, a kind of sequence have been followed. More than 2 crops have been grown in a particular year. So that will be your sequential cropping. So sequential cropping refer to growing of 2 or more crop in sequence on same piece of land in a farming year. Clear? So एक sequence में हमने 2 या 2 से ज़्यादा crop को grow किया है. That is sequential cropping. Clear? I hope this is clear what is sequential cropping. Now next we have is intercropping. Intercropping is basically, students, at a particular time we are growing more than 2 crop, right? जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दिया था कि खरीफ सीजन में मैं राइस भी ग्रो कर रही हूँ, मैं मेज भी ग्रो कर रही हूँ. आई एम ऑल्सो गोइंग फॉर ग्राउंडनट. सो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम यूटिलाइजिंग अ पीस ऑफ लैंड फॉर ग्रोइंग मल्टीपल क्रॉप्स. दैट विल बी कॉल्ड एज इंटरक्रॉपिंग. इंटरक्रॉपिंग क्या है? रिफर्स टू ग्रोइंग 2 और मोर क्रॉप इन अ सेम फील्ड एट अ सेम टाइम. ठीक है. किसी एक फील्ड में एक ही टाइम पे हम 2 या 2 से ज़्यादा क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, and that will be called as intercropping. Intercropping are again of different types. First we have is mixed intercropping. What is mixed intercropping? यहाँ पे what we have done, we have not followed any sequence. We have just mixed all the seed, or we have just, you know, like for say this is your field. आपके पास 3 seeds हैं, आपके पास राइस है, आपके पास मेज है, आपके पास फॉर से ग्राउंड नट है. ठीक है. तो आपने क्या किया? यू डू नॉट हैव फॉलोड एनी पर्टिकुलर सीक्वेंस, रादर यू हैव जस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड द सीड एंड मिक्सड ऑल दिस सीड्स, राइट? तो दैट विल बी कॉल्ड एज मिक्स्ड इंटरक्रॉपिंग, जहाँ पे कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस फॉलो नहीं किया जाता है, रादर द सीड इज ब्रॉडकास्टेड. ठीक है. सीड इज ब्रॉडकास्टेड. यू कैन सी इन दिस पिक्चर बहुत सारी क्रॉप्स ग्रो कर रही हैं एक साथ, राइट? सो दिस इज मिक्स्ड इंटरक्रॉपिंग. नेक्स्ट इज रो इंटरक्रॉपिंग. रो इंटरक्रॉपिंग क्या है? नाम से ही पता चल रहा है, रो. किसी एक पर्टिकुलर रो में हम क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं. यू कैन सी मल्टीपल क्रॉप्स आर ग्रोइंग इन अ डेफिनेट रो. दिस इज कॉल्ड रो इंटरक्रॉपिंग. क्लियर? देन वी हैव स्ट्रिप इंटरक्रॉपिंग. सो स्टूडेंट्स, एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ रो इंटरक्रॉपिंग इज स्ट्रिप इंटरक्रॉपिंग. रो इंटरक्रॉपिंग में हम एक एक रो ग्रो कर रहे हैं पर्टिकुलर क्रॉप की. In strip cropping, we are making a thick strip of a particular crop. यहाँ पे you can see a strip of maize is grown, a strip of soyabean, a strip of oat is made here. ठीक है. तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, किसी एक क्रॉप की एक रो के बजाय हम यहाँ पे उसके 3-4 या उससे ज़्यादा, या फिर you can say 7-8 रोज हम एक क्रॉप की ग्रो करते हैं टू मेक अ स्ट्रिप. देन वी ग्रो अदर क्रॉप. ठीक है. अदर क्रॉप की स्ट्रिप, दूसरे क्रॉप की स्ट्रिप बनाएंगे. ठीक है. देन तीसरे क्रॉप की स्ट्रिप बनाएंगे. तो इन फॉर्म ऑफ स्ट्रिप्स द क्रॉप इज ग्रोन. ठीक है. यू कैन सी अ स्ट्रिप्स इज फॉर्म्ड ऑफ डिफरेंट क्रॉप. ठीक है. दिस इज कॉल्ड स्ट्रिप इंटरक्रॉपिंग. क्लियर? नाउ ये इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर हम रो इंटरक्रॉपिंग करते हैं, देयर माइट बी कॉम्पिटिशन बिटवीन 2 क्रॉप्स.
अगर आप रो में ग्रो करोगे, लाइक फॉर से दिस इज द रो ऑफ वन क्रॉप, दिस इज द रो ऑफ अदर क्रॉप, सो देर आर हाई चांसेस ऑफ कॉम्पिटिशन बिकॉज दे आर इन क्लोज विसिनिटी. बट अगर हम स्ट्रिप में ग्रो करते हैं तो एक पर्टिकुलर लैंड आपने एलोकेट कर दिया है इस डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप के लिए, तो वहाँ पे कॉम्पिटिशन के चांसेस थोड़ा कम हो जाते हैं. क्लियर. नेक्स्ट वी हैव इज रिले इंटरक्रॉपिंग. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन हैव बीन आस्क्ड फ्रॉम हियर. ठीक है. रिले इंटरक्रॉपिंग क्या होती है स्टूडेंट्स? रिले इंटरक्रॉपिंग इज व्हेन वी आर growing or sowing the seed before harvest of previous crop. Let me give you the example. You can see here stubbles of rice crop. ठीक है, ये previously इस field में rice crop रही होगी, but इस rice के harvest से पहले हमने for से कोई pulse crop है, उसका seed हमने यहाँ पे sow किया है. तो राइस के हार्वेस्ट से पहले, प्रीवियस क्रॉप के हार्वेस्ट से पहले वी सो अदर क्रॉप, दैट इज योर रिले क्रॉपिंग. ठीक है. रिले क्रॉपिंग रिले रेस की तरह ही है. आप लाइन से पहले ही अपना जो पार्सल है वो पास कर देते हो दूसरे एथलीट को, राइट. तो ये ऐसा क्यों किया जाता है कि आपको टाइम बचाना है ना, आपको टाइम बचाना है, यू वांटेड टू बी अहेड. तो इसी के लिए रिले क्रॉपिंग में भी क्या होता है, दैट बिफोर हार्वेस्टिंग ऑफ प्रीवियस क्रॉप you grow the rice of other, you grow the seed of other crop. ठीक है. आप अभी हार्वेस्ट होने में, राइस को हार्वेस्ट होने में 10-15 दिन है, उस 10-15 दिन में के पहले ही, हार्वेस्ट करने के पहले ही आपने पल्स क्रॉप लाइक फॉर से लेथाइरस का आपने सीड सो कर दिया इन बिटवीन राइस. व्हाई इट इज डन? बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ मॉइस्चर दैट इज प्रेजेंट इन द फील्ड. राइस हार्वेस्ट हो जाएगी, उसके बाद वो मॉइस्चर लॉस्ट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ इवेपोरेशन. तो वी नीड टू यूटिलाइज दिस मॉइस्चर. और राइस ऑलरेडी अपनी हार्वेस्टिंग स्टेज पे आ चुकी है, तो उसको अब और मॉइस्चर की जरूरत नहीं है. सो वी कैन यूटिलाइज दिस दैट मॉइस्चर एंड वी कैन ग्रो अदर क्रॉप, और दैट क्रॉप कैन जर्मिनेट. उसके जर्मिनेशन के लिए फिर हमें कोई मॉइस्चर नहीं देना पड़ेगा फील्ड में. क्लियर. सो दैट इज कॉल्ड एज रिले इंटरक्रॉपिंग. क्लियर. I hope now all these things are clear to you. Now next type we have is multi-story or multi-level intercropping. So students, this is basically a type of intercropping or where we are utilizing the vertical height of different crops. You can see different height crops are grown together. तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, different height की जो crop होती है we grow them together so that we can utilize the vertical height of these crop, right? So this is called as multi-story or multi-level cropping. Two or more crop of different heights are grown simultaneously on a piece of land. ठीक है. This is called multi-story or multi-level cropping. So why it is done? Again, किसी एक particular piece of land से which is under one particular for say horticulture crop. आपके कोई land है, आपने उसको use किया है for the mango, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मैंगो. तो आपका जो मैंगो है उसको टाइम लगेगा अभी 7 से 10 साल टू कम इनटू द फुल प्रोडक्शन और टू कम इनटू द ब्लूम, राइट. सो आप उस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं एंड यू कैन ग्रो सम शॉर्ट हाइटेड क्रॉप अंडर द मैंगो ट्री, राइट. तो इस तरीके से मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग की जाती है टू यूटिलाइज द लैंड एफिशिएंटली, और इनकम को बढ़ाने के लिए ये किया जाता है. क्लियर. नेक्स्ट इज कंपेनियन क्रॉपिंग. नाउ स्टूडेंट्स, लेट मी टॉक अबाउट कंपेनियन क्रॉपिंग. कंपेनियन क्रॉपिंग क्या होती है? Basically, companion crops क्या होती है? The crops that can be grown together, right? That are companion to each other. They can support or not, but yeah, they can grow with each other very well, right? Now, a secondary crop here, when two crops, when they can grow alongside each other, so what we can do? We can grow them together, and we can, what we can do? We can increase the income from the field, right? So here what is done usually, the one example here is like we are growing sugarcane. ठीक है. Sugarcane is a very long duration crop which take around 16 to 18 months to come into harvesting stage, right? So farmer will have to wait 16 to 18 months for getting return from the field. But what if we can grow some short duration crop while the sugarcane is still germinating or it is coming to its full stage, right? तो हम क्या करते हैं उस particular duration में short duration crops like जैसे कि potato, onion, this kind of crop can be grown in between sugarcane rows so that हमें income मिलती रहे और हमें 16 से 18 month के बाद जो sugarcane है उसका wait ना करना पड़े. Clear? So this is the
companion cropping, and this is one of the objective of companion cropping. So basically it is done to hasten the return from the land. Clear? So I hope now each type of intercropping is clear to you, and now let's try to solve these questions. So first question was, what is the cropping pattern of sugarcane with short span crops such as potato or onion called that can be harvested before sugarcane reach maturity? And answer for this will be companion cropping. We have just discussed. ठीक है, companion cropping का हमने अभी example discuss किया था, and that was the question that was asked to you in your exam. Clear? So I hope ये question answer हो गया होगा. Next question is, growing two or more crops simultaneously on same field is known as, right? So till now we have discussed a lot about this, right? Till now you might have guessed the right answer, and it is option A, which is multiple cropping. दो या दो से ज़्यादा crop लगाते हैं, which is called multiple cropping. So answer will be option A, right? Next is, which of the following involves raising morphologically and physiologically different crop that complement each other? Succeeding crop can have immense potential. Now students, this was a tricky question. ठीक है? This question is regarding one of the cropping system or cropping pattern, sorry, that we have discussed already, but it is not asked directly. ठीक है? यहाँ पे if we read the line, it says it involved raising morphologically and physiologically different crops. ठीक है? That complement each other, okay. And succeeding crop have immense potential. Succeeding crops मतलब आने वाली crop का immense potential है. So basically students, this is the example, this is the type, this is the question regarding row intercropping, right? But if we see the options that were given was integrated farming, so it cannot be the answer. Integrated farming is completely different thing, okay? Supplementary cropping, okay, so let's see intensive cropping or extensive cropping. This can be again not be answered because intensive cropping or extensive cropping क्या है? Basically this is the different type of cropping system. ठीक है? तो cropping intensive में क्या किया जाता है? We intensify our input. ठीक है? Extensive cropping भी एक different type की cropping होगी जहाँ पे हम extensively use करते हैं. Like for say, देखो intensive में क्या होता है कि हम एक piece of land में बहुत सारा input use कर लेते हैं. That is intensive cropping. हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें returns चाहिए. एक्सटेंसिव क्रॉपिंग क्या होती है? हमारे पास लैंड बहुत है बट हमारे पास इनपुट कम है, तो हमारे पास इनपुट कम होने की वजह से हमारे पास प्रोडक्शन भी कम होता है, बट अगेन इट इज़ अ टाइप ऑफ एक्सटेंसिव क्रॉपिंग. ठीक है? तो अगेन ये क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा. देन वी हैव सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री इंटेंसिव इंटरक्रॉपिंग सिस्टम. देखो स्टूडेंट्स, सप्लीमेंट्री बेसिकली मीन्स दैट द क्रॉप्स दैट कैन सप्लीमेंट ईच अदर. ठीक है? क्रॉप दैट कैन सप्लीमेंट ईच अदर, राइट? So supplement each other means that they can be grown together. They can be grown together. Okay? ऐसा नहीं है कि कोई एक क्रॉप दूसरे को बेनिफिट कर रही है या हार्म कर रही है, बट yes, they can be grown together. Next is complementary intensive intercropping system. अब students, when we talk about this complementary crops हम कब ग्रो कर रहे हैं? एक तो हम companion, when we discussed about companion cropping, right? There we have discussed about complementary cropping. Complementary crops हम वहाँ पे ग्रो कर रहे थे. दूसरा, दो क्रॉप्स कहाँ पे इन्वॉल्व थी? इट वॉज इन्वॉल्व इन रो इंटरक्रॉपिंग, राइट? सो रो इंटरक्रॉपिंग में हमने क्या किया था? एक क्रॉप के पहले ही हमने दूसरी क्रॉप को ग्रो किया था. अब हमने एग्जाम्पल लिया था राइस एंड लेथाइरस का. लेथाइरस इज अ पल्स, राइट? सो राइस एंड लेथाइरस अगेन complement each other. That means they can be grown together for some part of time, and it is a form of intensive cropping. क्यों? क्योंकि हमने इनपुट ज़्यादा दे दिया है अपने पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड में, और ये इंटरक्रॉपिंग सिस्टम है. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे बेसिकली आंसर होगा कॉम्प्लीमेंट्री इंटेंसिव इंटरक्रॉपिंग सिस्टम. And now, from where this term has been taken? So when I researched about this particular question, so this was the term taken from any particular रिपोर्ट और देर वॉज सम काइंड ऑफ पब्लिकेशन जहाँ पे ये टर्म यूज हुआ था फॉर रो इंटरक्रॉपिंग. ठीक है? तो यहाँ पे बेसिकली यू कैन सी राइस एंड लेथाइरस, दे आर मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजिकोलॉजिकली डिफरेंट क्रॉप्स. ठीक है? एंड दिस लेथाइरस हैव ग्रेट पोटेंशियल इफ इट इज सोन अलॉन्ग विद द राइस क्रॉप एज अ रिले क्रॉप. ठीक है? तो दिस वॉज द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, विच इज ऑप्शन सी, विच इज कॉम्प्लीमेंट्री इंटेंसिव इंटरक्रॉपिंग सिस्टम. ठीक है? नाउ what to do in case अगर ऐसा क्वेश्चन आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन में आता है. तो लेट मी टेल यू, दीज आर द डिफिकल्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस. ठीक है? ये आपके किसी बुक में नहीं मिलेगा.
ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चन है. इफ़ यू नो द आंसर एंड यू आर कॉन्फिडेंट इनफ कि आप इसको करेक्ट अटेम्प्ट करेंगे, देन ओनली गो फॉर इट. अदरवाइज प्लीज डू नॉट अटेम्प्ट सच क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 110% गलती होने के चांसेस है. क्लियर? सो दिस इज द क्वेश्चन. आई होप नाउ यू आर एबल टू सॉल्व इट. ठीक है, तो this was the answer. Now next question is, in which of the following cropping pattern 4 crops can be grown but 1 crop is cultivated before the harvest of previous crop? ठीक है, so again very easy, it's very direct question कि 1 crop is grown before the harvest of previous crop. So we have discussed it is relay intercropping. Very easy, right? चलो, next question is, with sufficient irrigation facilities present, which of the following kinds of cropping system can be followed? Okay, now we'll again understand the question first. With sufficient irrigation facilities, ठीक है. So students, if we have limited irrigation facilities, so can we take multiple crops on that piece of land? Because these multiple crops will have multiple, different water requirement demand, right? And we have to fulfill it. So if we have sufficient irrigation facilities, then what kind of cropping system can we follow? So we can go for multiple cropping. Otherwise, if we do not have sufficient irrigation facilities, we have to either go for monocropping, right? That is the thing, only option we can only support, we have the irrigation only to support one crop, we will go for monocropping, right? So answer here will be multiple cropping. So first, from this question, what is the learning is, first read the question carefully. ठीक है, क्वेश्चन को रीड करना है. ऐसा नहीं कि यार हमने तो ये पढ़ा ही नहीं था कि इरिगेशन कौन सी क्रॉपिंग सिस्टम के लिए कितना इरिगेशन फैसिलिटीज रिक्वायर्ड है, अगर रिक्वायर्ड है तो कौन सा क्रॉपिंग पैटर्न होगा या कौन सा नहीं होगा. सो डू नॉट गेट पैनिक इन दैट सिचुएशन. अगर इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जामिनेशन में, प्लीज बी काम एंड रीड द line of the question first with sufficient irrigation facilities. ठीक है, तो it should click your mind कि हाँ, अगर हमारे पास इरिगेशन फैसिलिटीज है, मतलब वाटर रिक्वायरमेंट इनफ है प्रेजेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम कैन बी फॉलोड. ठीक है, सो स्टूडेंट्स देखो, हियर मल्टीपल क्रॉपिंग विल बी द आंसर. क्यों? अब आप बोलोगे मैम इंटर क्रॉपिंग क्यों नहीं आंसर है, मल्टीपल क्रॉपिंग क्यों है? सो इंटर क्रॉपिंग में हमने देखा था कि देयर वाज सीक्वेंशियल क्रॉपिंग एंड मल्टीपल क्रॉपिंग. ठीक है, तो सीक्वेंशियल क्रॉपिंग भी तब भी लिया जा सकता है जब आपके पास लिमिटेड इरिगेशन रिसोर्सेज है, क्योंकि आप एक सीक्वेंस में ले रहे हो ना, एक पर्टिकुलर टाइम पे आपको कुछ वाटर रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है, देन आपके नेक्स्ट सीजन में कुछ वाटर रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है, तो आप एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में ले रहे हो. दैट इज अगैन कैन बी डन अंडर लिमिटेड वाटर रिक्वायरमेंट. बट अगर आपको सफिशिएंट है तो यू कैन गो फॉर मल्टीपल, मतलब एक ही टाइम पे आप बहुत सारी क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हो. सो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर विल बी मल्टीपल क्रॉपिंग. अब मोनोक्रॉपिंग मोनोकल्चर तो आंसर होगा ही नहीं, क्योंकि मोनोक्रॉपिंग मोनोकल्चर के लिए हम एक ही क्रॉप ग्रो कर रहे हैं. ठीक है, तो again that is again done when we have limited resources. हमारे पास रिसोर्स ही कम है, तभी हम मोनोक्रॉपिंग मोनोकल्चर कर रहे हैं. क्लियर? चलो, I hope with this you have understood this lecture and you were able to answer all the questions that we have discussed. Now that's all for this lecture. If you have enjoyed the lecture, please do let me know in the comment section. Please let me know how was the lecture, as well as if there is any feedback. And thank you for watching. Thank you so much.